Assalam Alaikum. Welcome to my channel VuStdSol. Here, you will find everything. You will find short lectures, assignment quizzes, GDBs, and past papers of all books here. Please subscribe, like, comment and share. आज हम CS605 की सीरीज का लेक्चर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका लेक्चर नंबर 6 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट्स है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट्स। Software project management is a very important activity for successful projects. Software project management कामयाब प्रोजेक्टों के लिए एक बहुत अहम सरगर्मी है. In fact, in an organization at CMM level, basic project management processes are established to track cost, schedule and functionality. एक CMM सतह के इदारे में बुनियादी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अमल कायम किए जाते हैं ताकि लागत, शेड्यूल और काबिलियत को ट्रैक किया जा सके. That is characterized by basic project management practices. ये बुनियादी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस की खुसूसियत है. It also implies that without project management not much can be achieved. ये भी मतलब है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बगैर बहुत कुछ हासिल नहीं किया जा सकता. Software project management factors that influence results. The first step towards better project management. पहला कदम बेहतर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ है. Is the comprehension of the factors that influence results of a project. प्रोजेक्ट के नताइज को मुतासिर करने वाले अवामिल की समझ है. Among these, the most important factors are. इनमें से सबसे अहम अवामिल दर्ज झैल हैं. प्रोजेक्ट साइज, डिलीवरी डेडलाइन, बजट्स एंड कॉस्ट्स, एप्लीकेशन डोमेन, टेक्नोलॉजी टू बी इम्प्लीमेंटेड, सिस्टम कंस्ट्रेंट्स, यूजर रिक्वायरमेंट्स, अवेलेबल रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसर्न्स. In order to plan and run a project successfully, a project manager needs to worry about the following issues. Product quality. 2. Risk assessment. 3. Measurement. 4. Cost estimation. 5. Project schedule. 6. Customer communication. 7. Staffing. 8. Other resources. 9. Project monitoring. Why projects fail. The main reasons for the failure of software projects are: 1. Changing customer requirements. 2. Ambiguous incomplete requirements. 3. Unrealistic deadline. 4. Honest underestimate of effort. 5. Predictable and or unpredictable risks. 6. Technical difficulties. 7. Miscommunication among project staff. 8. Failure in project management. Management spectrum. Effective project management focuses on 4 aspects of the project known as the 4 Ps. These are people, product, process, and project.